So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class we are going to discuss the Hindu analysis for 31st January. And I'm sure you must be aware that we are having the Hindu analysis from Monday to Saturday at 8 p.m. At 8 p.m. And on Saturday I take the class. The rest of the classes are taken by Govind sir. So let us begin with today's class. So am I audible, visible? Is everything fine? The rest of the classes are taken. Is my voice clear, reaching? If yes, then please write yes in the comments. I am waiting for your response. आपके response का इंतजार कर रहा हूँ. Okay. So today is Saturday, 31st January, and let us discuss about a recent Supreme Court judgment. Menstrual health in school is integral to right to life, says Supreme Court. We'll be talking about it. The Supreme Court has asked the government to provide sanitary pads for free to women because it is actually a fundamental right under which article? Please tell me. Under which article? This you have to tell me. Then we'll be discussing about this Delhi blast, which was in the news in November specifically. So we'll discuss that as well. First of all, please tell me that the Supreme Court, when it is saying that menstrual health in a school is integral to right to life, which article is being talked about? Right to life kahan mentioned hai? Yes, Sarah, good body, you're right. Article 21. Very good. So basically, Article 21 talks about right to life and personal liberty. So menstrual health in schools is integral to right to life, says Supreme Court. The court says the lack of menstrual hygiene management, MHM, it is written in the article everywhere, in a school subject girls to stigma and humiliation. The girls, specifically those who are actually from financially poor backgrounds, they are not very much aware of this, and they actually do not have access to sanitary napkins and pads. So that is why the court has directed that every state and union territory should ensure the access to sanitary napkins in all schools. यानी सारे स्कूल में ये दिया जाना चाहिए free of cost, है ना? So the Supreme Court on Friday declared that right to menstrual hygiene and access to menstrual health management measures in education institution is part of fundamental right under Article 21. Okay, है ना? And denial of menstrual hygiene measures denies girls equal participation in school. Now, why it will deny? Because if there is thing attached with stigma, the girl will not go to school because she might feel like embarrassed going to the school, or she will feel like hesitated ki log mazak banayenge or something like that, or something. Maybe if she is not aware of availability of sanitary napkins, maybe it might start appearing on her dress or something like that. So to ensure that the girl should not be hesitant going to the school. Specifically, this is actually for those who are in the rural and poor background areas where the girl's family may not be able to afford it. Okay, so that is the idea behind this. And the Supreme Court has linked it with Article 21, capital A also. So first of all, we are talking about Article 21. So Article 21 says right to life, protection of life and personal liberty. No person shall be deprived of his life, his हर दोनों के लिए और से लिखा हुआ ऐसे, or personal liberty except according to the procedure established by law. Now, the Supreme Court in its various judgment has expanded Article 21. The most expanded article of the Indian Constitution is this. Okay, I have taken a separate class on this. Please watch it because this is the article that has been expanded the most. इसको देखिएगा आप. इसमें right to life और personal liberties को detail में explain किया गया Article 21 को. Okay, this has been expanded. So Article 21, right to life also means right to privacy. उसमें से if you read this article, it talks about right to live with dignity. इसका था क्या हुआ? Right to life also means right to live with dignity. यानी एक इंसान जब जिए तो वो इज्जत से जिए, है ना? मतलब respectful life jiye, hai na? So of course that comes here, hai na? So when they're talking about it, that the girl child, especially those who are actually from rural or poor backgrounds, should not feel stigmatized while going to the school, especially when she is on her periods or something like that. तो ऐसा उसको नहीं लगना चाहिए, मतलब उसको comfortable feel किया जाए और education. And in one more judgment, the Supreme Court said that Article 21 also says right to education is also a fundamental right.
ओके, सुप्रीम कोर्ट ने कहा. Later on, the Parliament made the amendment, 86th Constitutional Amendment 2002, and it was separately made an Article 21 capital A. Okay. So the Supreme Court says, Supreme Court is also quoting 21 as well as 21 capital A. 21 capital A says right to education, especially for 6 to 14 years of children. Okay. In such a manner. So if a girl is actually getting periods and she is not aware or she is not having access to sanitary napkins just because she belongs to a poor family or not much knowledgeable family, something like that. So she might be hesitant coming to the school believing that like she'll have problems or like it will be appearing on the cloth, etc., whatever is the case. So her education will also be denied. वो शायद स्कूल जा ही नहीं डरे या लोग मजाक बनाए या something like that. So that is why the Supreme Court said that menstrual hygiene is actually a fundamental right and sanitary napkins or pads should be provided to every girls in the schools. Okay, so that is why it is very important. So 21 and 21 capital A both becomes important. Someone is asking, sir, how it becomes judgment, landmark judgment. CLAT aspirant, एक तो ये है कि last 1 year में जो prominent judgments आए हैं वो prominent कैसे होगा मैं बताता हूं. फर्स्ट पेज पे आर्टिकल आएगा और उसके 1-2 दिन बाद एडिटोरियल में आता रहेगा. It will come on the first page and after 2-3 days it will keep on continuously coming on the editorial. So you'll have to think that this is an important judgment. ठीक है, कैसे समझ पाएगा? जो करंट अफेयर्स का है उस तरह समझना है. जो लैंडमार्क का जो पास्ट के वो तो बहुत प्रोमिनेंट वंस है जो कि हर जगह बुक्स वगैरह में पाए जाएंगे, ये क्लास में पढ़ाया जाता है, जैसे केस ऑफ नंदा भारती केस है और मेनी अदर केस लाइक दैट. ठीक है, इस तरह को समझना है. कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक दिन आएगा, अगले दिन मतलब अखबार में नहीं आएगा, तो उसको वो इतना लेस इंपॉर्टेंट है. देयर आर सम जजमेंट्स व्हिच कीप्स ऑन कमिंग. हु डिसाइड्स व्हाट इज, नो वन डिसाइड्स. वो जो मशहूर हो जाता है वो ज्यादा सवाल पूछ जाता है, लाइक दैट. प्लस लैंडमार्क वो होता है जो बड़ी बड़ी बेंच देती है, जैसे केस ऑफ नंदा भारती केस 13 जज बेंच, गोलकनाथ केस 11 जज बेंच, इंदिरा सानी केस 9 जज बेंच. तो जब बड़ी बड़ी बेंच होती है 7-9 जजेस से ऊपर, जैसे राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, दैट इज जनरली कंसिडर्ड एज लैंडमार्क जनरली. ठीक है, या कोई बहुत बड़ी चीज हिल गई हो, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्टोरल बॉन्ड वाज क्वैश्ड 1 or 2 years back, आई थिंक इट वाज ओनली अ 5 जज बेंच, लेकिन उस टाइम पर लैंडमार्क था एट दैट टाइम करंट अफेयर्स के पार्ट में. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू रीड इट. ओके, सो नाउ दिस इज एक्चुअली लैंडमार्क है ना, नो डाउट अबाउट इट. तो ये आपको पता होना चाहिए. 21 तो ऐसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी तो आपको पता ही होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा बोर्ड से. ठीक है, नेक्स्ट इज दिल्ली ब्लास्ट टेरर मॉड्यूल प्लान टू हिट कॉफी चेन. सो द ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, 10 November 2025 द ब्लास्ट हैपेंड नियर रेड फोर्ट इन दिल्ली and according to the different sources it was perhaps a suicide bomb attack, something like that. Okay, and almost around dozen people had died. So the group of doctors arrested in connection were allegedly conspiring to bomb the outlets of a global coffee chain whose founder is a Jew, according to a source in the government said. The source is not clear ki kisne ka, but that is what the Hindu says. Okay, so these are the 3 accused. That is what is being talked about. And this is the name of the group, Ansar Ghazwatul Hind, that was actually linked with these people. Okay, that is what you should be knowing. So it was founded by Zakir Musa, who was killed in encounter in 2019 in South Kashmir. So these are the things that you should be knowing. So this has been quoted by a source. मतलब कोई पुलिस सोर्स नहीं कहा होगा, but they have like the name of the person or the police officer or is not mentioned here. Okay. Let's move on. First page पे another article, deal with European Union to be implemented in 2026 itself, says Piyush Goyal. This is very important and I would say that's why we have decided to take a class. ठीक है, so upcoming class में Monday को we'll be having 3 PM पे we'll be having economic survey की class, है ना. Then Wednesday को ये वाली class होगी. We'll be talking about India European Union Free Trade Agreement. That's very important. So I've decided to schedule a separate class on that. That's why because it is actually important. एंड आई वुड सजेस्ट टिल नाउ, जब तक आपने नहीं पढ़ा तो यूरोपियन यूनियन की क्लास पढ़ के आइएगा. आप सर्च कीजिएगा, यू सर्च ऑन यूट्यूब यूरोपियन यूनियन करियर लॉन्चर. ठीक है, वॉच दिस क्लास करियर लॉन्चर लॉ इंटरेस्ट पूरा सर्च कीजिएगा. यू विल गेट अ ब्लू कलर थंबनेल. प्लीज वॉच दैट because European Union has been very much in the news and they can ask question. Even I will also ask the question in that class, Wednesday वाली क्लास में. ठीक है,
Let's move on. Another article on the first page says High Court, Allahabad High Court wraps UP police over shooting accused in Lex during encounters. इससे रिलेटेड आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पता होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसमें ये लिखा है allowing bail to an accused to a theft accused was shot in the leg by police during an alleged encounter. Allahabad High Court on Friday said such acts are not permissible in the laws as the power of punishment to the accused lies in the domain of the judiciary and not the police. So this will have to understand what the High Court has said. So first, High Court is saying that punishment to a person is, according to the law, it is not the job of the police to punish. It is the job of a judge to punish. Like to find someone guilty and punish. Jail bhejna ya whatever is the case. Okay, so that's why judge means judgment dena. Then what is the job of the police? The job of the police is, for example, if someone has committed a crime, let's say theft. Okay, the police will search it. Who has done the theft? So the police will try to find out the accused. जो शक के आधार पर. There'll be a budget. There'll be a class on annual budget tomorrow at 7 p.m. around, most likely. The police will arrest the accused or like on the basis of whatever the investigation they have done, they'll produce it in front of a judge. They will submit the document, and the thief who has been arrested or the accused who has been arrested will also be represented by a lawyer. The accused will also put his or her own like arguments through his lawyer, and the police through its lawyer will submit its own whatever evidence in front of a judge, and finally the judge will decide. Why it is? Because of course principle of natural justice. So I'm sure you must be aware of it. There are two very famous principles of natural justice. First, nemo judex in causa sua. What is the meaning of this? इसका क्या मतलब होता है लैटिन में? Anyone? No one shall be a judge in his own case. In his her own case. So that's why the police will not be the judge. Since the police has arrested the person accused, it will produce it in front of a neutral person, third person, and that is the judge. And the judge will hear both the sides. And another principle of natural justice says, audi alteram partem. Okay, so listen to the other side before passing a judgment. Before punishing someone or before passing a judgment. Okay. So that's why the judge will not only hear the argument of the police through the police lawyer, but also the argument of the person who has been arrested. इसीलिए judge साहब दोनों side की बात सुनते हैं. And then the judge will pronounce the judgment. So that is how the what we call it as due process of law is achieved, or the principle of natural justice. Is it clear? ये सब कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं conceptual clarity का. Have you got the concept? Because you are going in that field, so you should be knowing it. The due process of law. Is it clear? Yes or no? Yes. I hope it's clear. But the problem is the entire judicial process is very slow. That is the problem. And that's why people believe that whenever encounters happens, people believe कि हाँ ठीक हुआ, punishment मिला, etc. and all. But the thing is, there's no guarantee. Like, that's the thing. So generally, in general, the police is not supposed to do an encounter unless until encounter can only be done when in self-defense. When the accused is firing on the police, in that case, the police can shut it down. Okay. Otherwise, the person, the accused, should be arrested, produced in front of a court, and it is the judiciary who should be passing a judgment after listening to both the arguments. Now, the thing is, that is what the High Court has said. Okay. It is not permissible in the eyes of the law. And there is a very famous judgment of the Supreme Court that you should be knowing. And this is called as PUCL versus the State of Maharashtra. So, guidelines regarding encounter. 2014. Very famous judgment. Okay. याद रखिएगा. Because we have seen whenever encounters comes in the news, ये वाले judgment के बारे में बात होती है. People's Union for Civil Liberty, I think it's a sort of an NGO type something, versus State of Maharashtra.
Okay, guidelines that needs to be followed while by the police during encounters etc and all. So ये मतलब ये कहा गया था कि resort to half encounter मतलब कि पैर में शायद गोली मार देते हो something like that. So the judiciary has said that नहीं आप arrest करके लाइए उसको, produce it in the front of the court and the court will pass a judgment. ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014. ओके, 16 पॉइंट गाइडलाइंस दिया गया था, है ना. हाँ, तो ये सब लिखा था. कई बार क्या होता था कि लाइक है ना, तो आप पढ़ सकते हो कि दीज आर द थिंग्स यू शुड नो कि जो पुलिस एनकाउंटर कर रहा है उसको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं दिया जाए, ये भी मना किया गया था. आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मतलब है कि जैसे 5 साल बाद आप प्रमोट होंगे एंड यू आर अ पुलिस ऑफिसर, यू हैव डन एन एनकाउंटर एंड यू आर प्रमोटेड आफ्टर 2 years. सो दैट्स कॉल्ड एज आउट ऑफ टर्न, यानी पहले ही प्रमोट कर दिया गया. सो दिस विल इनकरेज अदर टू किल, स्टार्ट डूइंग एनकाउंटर. Yes, not only in judiciary but other places also. Nemo Judax in Cosa Sua. सब जगह इंप्लीमेंट होता है, ब्यूरोक्रेसी में इंप्लीमेंट होता है. इवन इफ यू आर इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत जगह ऐसा होता है जहां पर न्यूट्रल कहा जाता है ना कि न्यूट्रल थर्ड पार्टी हो. जैसे इन मेनी लाइक इफ यू गो इन कॉर्पोरेट, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में भी इंप्लीमेंट किया जाता है. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू जुडिशरी, इट कैन बी इंप्लीमेंटेड इन योर लाइफ ऑल्सो. ठीक है, तो बहुत सारी जगह होती है जो व्हाट वी कॉल इट एज टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. Even in private companies, private organization, different places, you will find this, है ना. Yes, तो इसमें जो है PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें देखो encounter killings are not legal as such, है ना. Right to life is paramount, है ना. Mandatory independent investigation, proof, burden of proof on the police to claim, है ना, कि you have killed only because you are doing it for self defense etc, ना. Compensation to victims family, ये सब था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट. ये याद होना चाहिए, कई बार पूछा था PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है. Now let's move on to editorial. आपको पता होगा, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर बाय नाउ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटोरियल. ये दोनों आर्टिकल है ऑथर बेस्ड. इट मींस दीस आर ऑथर्स नेम इज मेंशन्ड. इट मींस दीस रिप्रेजेंट्स द ओपिनियन ऑफ द ऑथर्स. इट हैज नथिंग टू डू विद द हिंदू न्यूज़पेपर, बट दीस टू are authorless actually, and these two actually editorials represent the opinion of the Hindu editors. The Hindu editors, or I would say the stand of the newspaper. किसी एक टॉपिक पर इस अखबार का क्या स्टैंड है. Can I get holistic explanation about principle of natural justice in any book? I'm not sure. किसी न किसी बुक में होगा, but there are multiple, 4 5 6 हैं. ठीक है, ये दो बहुत फेमस है जो मैंने बताया, ऑडी अल्ट्रम पार्टम और नेमो जोडक्स वाला, और 2-3 है. ठीक है, आप आई एम नॉट श्योर अबाउट द बुक, यार बुक मिले लेकिन. ठीक है, खैर. ओके, नाउ तो अब देखो हम लोग बात ये बता रहे थे. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. तो ये कोई ऑथर ने लिखा है ना, और ये लिख कह रहे ग्रीन स्टील कैन शेप इंडियाज क्लाइमेट गोल ट्रेजेडी. अच्छा, आपने नहीं कुछ पढ़ा, इसका क्या मतलब हुआ? इवन विदाउट रीडिंग दिस आर्टिकल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन स्टील? व्हाट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्या समझ में आया? ग्रीन स्टील मींस ग्रीन कलर स्टील. स्टील ग्रीन कलर का पेंट कर दिया तो ग्रीन स्टील हो गया. इज इट सो? Whenever we use the word green, a lot of time it means environment friendly or eco friendly. Because steel production in general causes pollution. इतना तो पता ही होगा, स्टील जब प्रोड्यूस होता है तो pollution होता होगा, थोड़ा बहुत तो जानते होगी. So green steel means we are producing steel in such a way that it should be eco friendly. That's the idea. Yes, very good. People are writing here. So basically that is what he is writing as a steel industry veteran and former vice president of safe health and sustainability at so Tata Steel के एक बहुत सीनियर ऑफिसर रह चुके हैं. ठीक है, सो उन्होंने क्या लिखा है? इंडिया स्टैंड्स एट अ डिफाइनिंग मोमेंट. लास्ट ईयर वी हैड COP30. सो COP30 अगर आप जानते हो, आई एम श्योर बाय नाउ यू आर अवेयर ऑफ दिस. इफ यू आर नॉट अवेयर, प्लीज सर्च दिस. इसमें एक क्लास है, ये देख लीजिएगा. एंड इसमें इस क्लास में मैंने एक और सजेशन दिया है, इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल समिट करके, वो देख लीजिएगा. इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल समिट, समिट्स करियर लॉन्चर, ऐसे सर्च करना, यू विल गेट दैट. तो जो हम सजेशन देते जा रहे हैं वो अगर आप करते जाओगे ना तो आप आराम से, बहुत फायदा होगा आपको, बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे क्वेश्चंस. ओके, सो COP30 बेलेम ब्राजील में, उसी से रिलेटेड बता रहे कि यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर भूपेंद्र यादव कमिटेड द कंट्री टू सबमिट NDC, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन. ये क्या होता है? ये यहाँ ये वाली क्लास और ये वाली क्लास देखोगे तो समझ में आ जाएगा. ठीक है, बिकॉज करंट here I cannot explain each and everything. We have made a separate classes for that. ठीक है, सो मतलब एक तरह से बोलो तो इंडिया का प्रॉमिस,
इंडियाज प्रॉमिस टूवर्ड्स फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, ऐसे समझ लो, टूवर्ड्स फाइटिंग सीसी। इंडिया क्या क्या प्रॉमिस? एज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, the steel sector is the cornerstone of India's growth. Private sector in fact reach the country's potential sector. वही सब नंबर बता रहे, नंबर नहीं याद रखना, वही बता रहे हैं कि लाइक स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वी हैव टू इंश्योर दैट स्टील प्रोडक्शन शुड बी इको फ्रेंडली। ठीक है, अब ही इज टॉकिंग अबाउट यूरोपियन यूनियन सीबैम, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज सीबैम? थोड़ा सा कुछ भी, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। We are going to take a class on Wednesday 3 p.m. regarding India-European Union Free Trade Agreement. So CBAM plays a very important role in this topic. What is CBAM? Carbon Border Adjustment Mechanism. Anyone? So I'll take an example of steel only. तो उससे समझ में आ जाएगा. For example, India is exporting steel to European Union. I'm just giving an example. ठीक है. Now, so the European Union says, let me check. मैं देखता हूं आप when you are producing steel in your country, are you causing pollution? If yes, then European Union says, I will put a tariff called as CBAM. It's a sort of an environment tax. Yes, Sambhav Sharma, you're right. Huh? Environment tax. Taki, so that you should avoid causing pollution when you are producing steel. Will ensure carbon price of imports is equivalent to carbon price of domestic production. But what is problematic? Why India has protested? India is saying, fine. देखो उसमें दो तीन चीजें, like we are saying कि in European Union saying I am doing this top of environment tax so that India will be discouraged to cause pollution. India will try its best to produce steel in an eco-friendly way. But India का क्या accusation है? Again, CBDR, common but differentiated responsibility. ठीक है? Common but differentiated responsibility means everyone should not be treated equally. Developing world and developed world should not be treated equally. दोनों को एक जैसा आप ट्रीट नहीं कर सकते हो. Common but differentiated responsibility. So India is a developing country. We are still in the developing stage. And UK, US, they have already caused a lot of pollution in the last more than 200 years. And they have already got developed after causing a lot of pollution. Now they cannot teach us right now that you should also not be doing pollution. But the thing is, you have already done so much damage. है ना? तो आप हमको like developing world and developed world should not be treated equally. That's the idea of CBDR. Common but differentiated responsibility. ठीक है? Is it clear? वैसे जो मैंने इन्वायरमेंट वाली क्लास आपको बताई, ये वाली, और ये जो मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल समिट्स का लॉन्च करके सर्च करना, ग्रीन कलर का थंबनेल मिलेगा. वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, वो देख लीजिएगा. उसमें मैंने एक्सप्लेन किया CBDR कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल. ठीक है? तो चूंकि ये जो ऑथर है ये खुद जो है Tata Steel में रह चुके हैं. So he's talking about Tata Steel has piloted injection of hydrogen in blast furnace and scale renewable energy. वही एग्जांपल बता रहे हैं कि कैसे जो है स्टील में pollution, steel manufacturing में pollution should be reduced and all. So these are the things he's talking about. ठीक है? India has made important strides to get direction to the steel sector, release of government's green steel roadmap, etc. वही greening steel मतलब we are trying our best to ensure that steel production should be environment friendly. That's the idea behind this. ठीक है? ओके, अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना. नो नीड टू गो इन डिटेल. लाइक तो नेट जीरो एमिशन की बात हुई, बस आप इतना बता दो व्हाट इज इंडियाज नेट जीरो एमिशन टारगेट. इंडियाज नेट जीरो एमिशन टारगेट बताइए. Net zero emission target. And if anyone will tell me what is the meaning of it, I'll be very happy to know. $2070, very good. इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है? संभव विल कम टू दैट. यूरोपियन यूनियन वाली क्लास लेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन इंडस्ट्रीज पर इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा. अभी तो थोड़ा सा आइडिया दे दिया.
है ना. India's net zero emission target 2070. नेट जीरो इमिशन का मतलब क्या हुआ? नेट जीरो इमिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? Because when you read editorial, I am damn sure you must have come across this term. जैसे यहाँ पे भी लिखा है नेट जीरो इमिशन वर्ड, अगर आप अगले 6 महीना 7 महीना 1 साल अखबार पढ़िएगा तो जरूर मिलेगा ये टर्म. Shall I give you homework to find out? अच्छा चलो एक काम करते हैं, आई एम गिविंग एज अ होमवर्क नेट जीरो इमिशन का मतलब क्या होता है फाइंड आउट करना. एंड आफ्टर द क्लास इज ओवर यू विल बी प्रोवाइडेड अ रिकॉर्डेड वीडियो. सो जो नीचे कमेंट होगा स्टैटिक कमेंट, उसमें लिखना है आंसर क्लास खत्म होने के बाद. ये तो लाइव चैट है ना. नो हार्मफुल इमिशन बाय 2070. देविका वो एकदम 100% परफेक्ट आंसर नहीं है वो, ठीक है. यू आर नियर टू द आंसर बट दैट इज नॉट द आंसर. नेट जीरो इमिशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? आफ्टर द क्लास इज ओवर सर्च एंड राइट इट इन द कमेंट, नीचे कमेंट में लिखिएगा, ठीक है. So that is what you should know. Now, एक साइड में आर्टिकल है, they're talking about economic survey was released, very important. We'll be having a separate class on Monday at 3 p.m. Monday को 3 p.m. पर on the same YouTube channel. We'll be having a separate class on economic survey. ठीक है. Sunday को यानी tomorrow Sunday को we'll be presenting a budget. We'll be having a budget class. Most likely 7 p.m. पर होगा. आप चैनल सब्सक्राइब किया रहो. As early as possible we'll come to that. But ये पता होना चाहिए. एंड मंडे को विल बी हैविंग इकोनॉमिक सर्वे की क्लास. दैट इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. हु इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया? नहीं, नो ग्रीन हाउस गैस भी उसका आंसर नहीं है नेट जीरो इमिशन का, ठीक है. आई एम गिविंग यू होमवर्क, उसको फाइंड कीजिएगा आप, ठीक है. नेट जीरो इमिशन का मतलब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर? ही इज द पर्सन हु राइट्स इकोनॉमिक सर्वे, मींस द मेन पर्सन बिहाइंड राइटिंग ऑफ इकोनॉमिक सर्वे. देखो कहा जाता है ना, नकल के लिए अकल चाहिए. देखो आपके सामने सामने स्क्रीन पर है. वी आनंद नगेश्वरन हैज वन सेकंड शूट, है ना. यस देविका यू वर राइट. हाँ, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और फाइंड आउट कीजिएगा, नीचे कमेंट में लिखिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट. बस आप नेक्स्ट क्लास में याद दिला दीजिएगा. वी आनंद नगेश्वरन, राइट. हाँ ठीक है. सो इसमें भी बता रहे हैं, तो इसके लिए तो हम लोग सेपरेट क्लास लेंगे. तो अब यहाँ पर इतना एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है. नीचे आते हैं, है ना. 27th अमेंडमेंट, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक डायलेमा. देखो जनरली वॉट एवर माई एक्सपीरियंस इज, जनरली द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ अदर कंट्रीज आर नॉट आस्क्ड. इतना जनरली नहीं पूछते हैं कि पड़ोसी मुल्क, बट चलो ठीक है, एक रफ आइडिया दे देते हैं. सो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट Pakistan's legislature, means Pakistan's parliament has passed a 27th amendment. इसको PCA लिख रहे हैं. 27th amendment is called as PCA. So एक दो लाइन में बताएं तो उसमें ये क्या करें कि original jurisdiction of the constitutional independent fundamental right and over to a federal constitutional court. ये किया ये गया है कि जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट थी, all the important powers were taken out and given to FCC, Federal Constitutional Court. अब पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, गॉड नोज बेटर कि वेदर इट विल बी इंडिपेंडेंट और नॉट एंड एटसेट्रा. तो ये बता रहे कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पावर को रिड्यूस कर दिया गया सब्सटेंशियली. उसमें क्या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जितना भी होता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यू अंडरस्टैंड, जो डायरेक्ट जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, जैसे आर्टिकल 32 के अंडर फंडामेंटल राइट्स इंडिया में, है ना, जैसे फंडामेंटल राइट्स, है ना. फेडरल प्रोविंशियल डिस्प्यूट यानी सेंटर स्टेट डिस्प्यूट जब होता है इंडिया में ऐसी होता है सिमिलर. आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग इट, थोड़ा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ बस. So means the idea is the Pakistan Supreme Court power has substantially been reduced and now it is given to Federal Constitutional Court. That's 27th Amendment. And now why is saying, because the Supreme Court of Pakistan has in some cases there are some landmark judgment, जैसे वो बोले Panama Papers case, Memo Gate controversy etc. तो है ना, तो Panama Papers में I think this person was reduced. There was a person, हाँ, in 2017 the Supreme Court of Pakistan removed the Prime Minister Nawaz Sharif because there was an allegation of Panama Papers leak. So Panama Papers में हुआ ये था कि उसमें बहुत ऑफशोर यानी दूसरे कंट्री में जाके बहुत सारा इलीगल आई वुड से प्रॉपर्टीज थी डिफरेंट प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज की. So one of them was Nawaz Sharif and he was accused of violating this oath, honest or truthful. These are mentioned in the Pakistan Constitution etc. तो उसके बाद क्या हुआ कि the Supreme Court of Pakistan had removed him. तो वही it is being talked about, it is given example that the Supreme Court of Pakistan has done it.
तो बस इतना बताना चाहिए 27th अमेंडमेंट, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, आई डोंट थिंक सो। दैट द सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, द पावर हैज बीन रिड्यूस्ड, गिवन इट टू द न्यू बॉडी एस्टैब्लिश्ड कॉल्ड एज एफसीसी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। ठीक है, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं जानना है। ठीक है, एक दो वर्ड है जो कि मेंशन था, वो है ग्लोबल साउथ और साउथ एशिया। This I wanted to highlight these two words because these are asked in the exam. Sir, in Parliament it is presented by Finance Minister. हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट पेश करती है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन जो है वो पेश करेंगे इकोनॉमिक सर्वे, वो पेश कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म साउथ एशिया। व्हाट इज साउथ एशिया? साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्री आएगी? तो ये रीजन है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इसको कहते हैं सेंट्रल एशिया, एशिया के बीच में। हाँ, कल बजट क्लास है, ऑफ कोर्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन। यस, तो देखो मैं रेड से पहले बताया तो रफली लाइक दिस है ना, ये वाला जो है ये एशिया है, रेड वाला जो मैंने बनाया। ठीक है, हाँ, एंड इस रीजन में क्या कहेंगे? वेस्ट एशिया। ये वाला है सेंट्रल एशिया। ठीक है, जो हम लोग रह रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये उसको कहते हैं साउथ एशिया। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं किसी वजह से। ये इसको कहेंगे साउथ ईस्ट एशिया। यू अंडरस्टैंड इट? साउथ नॉर्थ ईस्ट समझ में आता होगा तो होपफुली। और ये वाला जो है नॉर्थ कोरिया, जापान, चाइना और रशिया, इसको कहते हैं ईस्ट एशिया। इज इट क्लियर? हाँ, कल बजट की क्लास है ना? ठीक है, टुमारो मोस्ट लाइकली एट 7 PM। थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो आप देख लीजिएगा, बट मोस्ट लाइकली उसी टाइम पे होगा। सुबह में बजट पेश किया जाएगा, सो विल लिसन टू इट, देन विल हैव अ क्लास। जो कल 3 PM पर 8 PM पे क्लास होती है वो सब नहीं होगी टुमारो, ना, बिकॉज टुमारो स्पेशल बजट इज देयर। इज इट क्लियर? ये समझ में आया? So India lies in South Asia. So when we are talking about South Asia, we are talking about India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Nepal, भूटान, श्रीलंका, ये सब। ठीक है सर, सीरिया इराक वेस्ट एशिया क्यों नहीं है? सीरिया इराक वेस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया बताए तो ये वाला हिस्सा को वेस्ट एशिया कहते हैं, वेस्ट एशिया भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम मिडिल ईस्ट भी है। ठीक है, मैं बताता हूं उसको। This region is, you're asking about this now, this region is called as West Asia. कितने में चलेगी क्लास? 7 PM रफली इवनिंग में। ठीक है, बजट वाली क्लास। इसको हम लोग मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और व्हाई इट इज कॉल्ड एज मिडिल ईस्ट, सो आस्किंग रीजन। और ये वाला जो रीजन ईरान, इराक, सऊदी अरब, जो मैं रेड से बना रहा हूँ, गल्फ, ओमान, ये कतर है, ये कुवैत है, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यहाँ पे बहरैन है, इस रीजन को हम लोग गल्फ कंट्रीज कहते हैं। हम लोग बोलते हैं गल्फ में जॉब करते हैं, ऐसे बोलते हैं। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड, बिकॉज इस ये वाला जो है ना, ये पानी, दिस वाटर इज कॉल्ड एज पर्शियन गल्फ, एंड नाउ इट हैज बीन रीनेम्ड बाय मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एज गल्फ ऑफ अरबिया और अरबियन गल्फ। ठीक है, वो बात हुई है। ठीक है, बट पर्शिया जो है ईरान का नाम है इसीलिए। ठीक है, सो इस रीजन को गल्फ कंट्रीज कहते हैं, which includes Kuwait, Iran, Saudi Arab, even Iraq also, Qatar, Bahrain, United Arab Emirates, and Oman, because it is touching the Persian Gulf. ठीक है, I hope these concepts has to be crystal clear. फिर एक और टर्म इसमें मेंशन है, ग्लोबल साउथ। सो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, ब्रांट लाइन कहते हैं इसको। दिस इज द लाइन विच आई एम मेकिंग इट, है ना? ये जो रेड लाइन है, इसको ब्रांट लाइन के नाम से डिफाइन किया गया। सो जो ब्लू वाली लाइन, उसको कहते हैं ग्लोबल नॉर्थ, एंड जो नीचे वाला रेड वाला है, दैट्स कॉल्ड एज ग्लोबल साउथ। ठीक है, हाँ, तो ग्लोबल साउथ आर डेवलपिंग कंट्रीज एंड ग्लोबल नॉर्थ आर डेवलप्ड। दैट्स व्हाई ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, they are geographically south but still they are added in global north because they have already been developed. मैं क्यों बता रहा हूं? Because in many cases there is global north versus global south fight मतलब जो भी issues, like for example environment के मैटर पर अभी मैंने बताया, वही common but differentiated responsibility. Global south says कि north और developed और developing countries should not be treated equally when it comes to fighting climate change.
ओके समझ गए ना. इवन एट WTO ऑल्सो देयर इज अ टसल बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ और डेवलप्ड कंट्रीज वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज. तो ग्लोबल साउथ जैसे कहा जाता है इंडिया इज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ. ठीक है, वन ऑफ द लीडर. तो इंडिया इज द लीडर ग्लोबल साउथ में, इंडिया कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, तो ये सब टर्म आप जब पढ़ोगे ना एडिटोरियल, सो यू विल कम अक्रॉस दीस टर्म्स. दैट्स व्हाई वी हैव एक्चुअली डिस्कस्ड इट. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इक्विटी रूल्स. यूजीसी का एक रूल आया प्रमोशन ऑफ इक्विटी, उसके बाद जो है काफी हंगामा हो गया एंड ऑल. तो उसके बाद जो है लाइक पीपल एक्चुअली जैसे मतलब इक्वालिटी और इक्विटी, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर. इसका डिफरेंस समझते होगे. एंड उस पर एक फोटो काफी वायरल होती है गूगल इमेज में. चाइना को नहीं डेवलपिंग में ही माना जा रहा अभी तक, बट यस यू कैन डिसएग्री दैट इट माइट बी अ डेवलप्ड वर्ल्ड. तो इसमें ये जो आया कि what happened was there was a person called as Mr. Rohit Vemula. He actually died and he was actually belonging to the lower caste, and after that there were issues ki there has been discrimination against the lower caste in the colleges and universities. So after that the UGC came up with the law, or I would say the parliament came up with the law. The government decided to come up with a bill to amend the UGC and यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. ऑफ कोर्स आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज यूजीसी. तो इसको ये पूरा बिल का नाम ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. ओके, दैट इज व्हाट यू शुड नो. तो इसमें ये थे कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बनाया जाएगा, है ना, टू हैंडल कंप्लेंट्स रिलेटेड टू डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर और डिसेबिलिटी. सो देयर शुड बी एन इक्विटी ऑफिसर हु शुड बी एंश्योरिंग these things and all. Their suggestion should be for sensitizing faculty etc. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. इसको तो हम लोग स्ट्रिक्ट सेपरेट क्लास लेना पड़ेगा, बट हमको थोड़ा सा आइडिया देते कि बैकग्राउंड तो पहले ये था कि रोहित वेमुला के डेथ के बाद, रोहित वेमुला डाइड एक्चुअली इन 2016. इट्स ऑलमोस्ट 10 years नाउ. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. लेकिन उसमें जो क्रिटिसिज्म वगैरह ये था कि हाँ कि इट मे कॉज रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन. मतलब ये एज्यूम किया जा रहा है कि अपर कास्ट स्टूडेंट विल एक्चुअली कॉज डिस्क्रिमिनेशन और हैरास द लोअर कास्ट स्टूडेंट. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि इवन इट कैन बी वाइस वर्सा आल्सो इन सम केसेस. So that these are some of the arguments. We are not going in that detail who is right and who is wrong. You can agree or disagree with someone. So supporters view the regulatory as a necessary step. Some supports it actually. Some are opposing to this and some are supporting it. Okay. तो इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया यूजीसी इक्विटी रूल्स which alleged recognize only caste based discrimination committed against scheduled caste, scheduled tribe and OBCs. So the regulations have sweeping consequences which will divide the country, says the Supreme Court. Okay, they just said. Ragging is one of the biggest problem in education institution. If a general category candidate further fresher resists ragging by scheduled caste, there is a chance that the latter could file a complaint under this rule. मतलब ये कहा ये जा रहा है कि अगर वाली को सीनियर है and it is belonging to let's say scheduled caste and that is doing ragging against a first year student who belongs to upper caste, in that case में ये भी तो अपोज कर सकता है ना कि अरे आप हमको क्यों हैरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं. दैट इज द थिंग, है ना. हाँ, ये है कि अगर को वही कह रहे हैं कि अगर दैट इज द केस तो फिर वो बोलेगा जाकर के जो सीनियर है वो जाकर हो सकता है यूजीसी के अंदर हरास कर उसी पर केस लगा दे कि दिस अपर कास्ट स्टूडेंट वाज हरासिंग मी, समथिंग लाइक दैट. एनीथिंग कैन हैपन. इट इज नॉट अबाउट कि all the upper castes are bad or all the lower castes are good or vice versa etc. Anything can happen because of course we are such a big country with so much diversity, so much good and bad people in every caste, religion, people. तो कोई भी किसी भी जगह अच्छा बुरा हो सकता है ना. So that is what is being said कि उससे हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए. Maybe if frivolous complaints have been made, false complaint बना दिया गया तो फिर harassment होगा जो individual है उसको, है ना. So that is what is being talked about. तो मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया. वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, अदरवाइज इट विल बिकम टू लॉन्ग, बट दैट इज व्हाट. सो देयर आर बोथ द ओपिनियंस. सम पीपल आर सपोर्टिंग इट दैट yes it is important because there are incidents of course no doubt where the people of lower caste are being harassed. That is also the case, but this law can be misused also by someone. तो वही सब चीजें. So these are the things that you should be talking about. खैर फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया गया कि maybe the chances of misuse are also there and all. खैर, Sunitra Pawar will be the deputy chief minister, first woman deputy chief minister. इस पर भी मैं I have decided to take a class on Tuesday 3 PM because last year also जब Air India crash हुआ था they have asked entire passage. इस बार भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. So that's why I have decided to take a class on this. ठीक है, है ना. वो आर्टिकल 15 की बात हो रही है. देखो आर्टिकल 15 talks about it कि state shall not discriminate. However यहाँ पर exception लिखा है
है ना, कि the state can provide make a special arrangement for SC, ST and all. So example जैसे reservation to SC, ST is actually comes from here, Article 15, Clause 5. So those who are defending it, they are actually quoting Article 15. ठीक है, so ठीक है, you can agree or disagree, है ना, with this and all. So PM Modi speaks to Venezuela's acting president. I'm sure what has happened to Venezuela's president, आपको पता होगा, ये वाली क्लास देख लीजिएगा. That's why we are having acting president here in Venezuela. If you are not aware, please watch this class, है ना. फिर ये इंडिया यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. विल हैव अ क्लास, सेपरेट क्लास ऑन वेडनेसडे 3 PM. सो राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग इट इन डिटेल. ठीक है, सो वी आर स्टॉपिंग दिस क्लास हियर, है ना. Please subscribe to our channel, press the like button, share this video. We'll be meeting you tomorrow with a budget class, most likely somewhere around 7 PM. ठीक है, so आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जब भी आप ऊपर वीडियो आएगा you'll get to know. So thank you everyone, thanks for watching, have a nice day.